Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, after ECGC PO first shift, I have asked you to tell me in comment column your attempts and your performance. So, based on that data, I am giving an advice. The review video I will put late in the evening after seeing the performance of both the shift. But I am placing this video in between because many of you have already appeared and you want to utilize the time. So what should be done? After reading your comments, I observe one thing common. Many of you have not understood the exam. Most of you are still stuck in quant, reasoning, and all these subjects, and you are trying to see your performance in this. But when result will come, you will find some surprising interpretations. The candidates, those who have done well in essay writing and essay writing, the candidates, those who have done in general awareness as well as English, they will be ones, those will be called for interview. Because your performance in quant and reasoning will even out. The type of candidates they are looking for interview is the people, those are very strong in English and in communication skills. They have hinted in their subjects also. The English topics hints where their emphasis is. Their emphasis is your communication skills in English. So all the candidates, those who have done well in essay writing, essay writing, as well as English paper and general awareness, they can devote time for interviews. For rest of the candidates, it will be a surprising result. Sometime I tell something which may not be liked by many people, but I try to give you the right advice so that you can save your time and put your energies on the areas that will fetch you a job. So the candidates, those who have done with their exam, my advice is, if you are expecting that you may be called for interview, this is your expectation, then just spend 10% of your time for interview preparation, spend 90% of your time for future 6 examination preparation. That is my advice if you are not employed as yet. If you are already working as probation officer or as clerk, then your priorities will be different. If you are working as clerk, prepare for PO exams. If you are already working for PO, complete your JIB, CIB, and try to move further in your organization or focus for next year RBI grade B, or we can say future RBI grade B examination if you are already probation officer. But most of you will have a surprise because the way you are telling your attempts, that shows the conditioning of mind of candidate and the what examiner wants. There is a total mismatch. The paper is loaded towards communication. The paper pattern is so designed that he wants to check your communication skills. And very few of you have given any tangible information on essay writing or essay writing. That shows you are still bogged down by the subjects like reasoning, quant, and you have treated this as another banking examination. So my advice is, don't spend too much of time on the interview preparation of this exam. Just devote 10% of your time on that. Wait for the result. If positive result comes, then you give 100% on the interview.
If negative result comes, so that your time is saved, you should now focus on 6 important exams in banking so that you are employed. If you are unemployed, this is my advice. For others, I have already given my advice. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट के कुछ कमेंट्स मेरे पास आए हैं। हालांकि मैं चाहता था एक ही वीडियो में डालूं शाम को दोनों शिफ्ट्स का देख के, पर मैं ये चाहता हूं कि जिन लोगों ने ECGC का एग्ज़ाम दे दिया है, अब वो इस टाइम को यूटिलाइज कर लें, उनका टाइम फर्दर वेस्ट ना हो। तो पहला हमें ये समझना है कि जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं उससे जो इन्फ्लुएंस निकल रही है, उससे मुझे ये पता लग रहा है कि काफ़ी लोगों को ये समझ ही नहीं आया ये क्या एग्ज़ाम है, क्योंकि आप इसको एक अनदर बैंक एग्ज़ाम ट्रीट करके अपनी फीडबैक दे रहे हैं, जबकि इस एग्ज़ाम से क्लियर इंडिकेशन निकल के आ रहा है उसका फोकस कहाँ है। उसका फोकस है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक करने का, उसका फोकस है आपकी लैंग्वेज पे कमांड चेक करने का। तो जिन लोगों का एसे राइटिंग एक्सीलेंट हुआ है, जिन लोगों का प्रेसी राइटिंग एक्सीलेंट हुआ है, जिनका इंग्लिश पेपर एक्सीलेंट हुआ है, जिनका पेपर जनरल अवेयरनेस का एक्सीलेंट हुआ है, उनको अच्छा रिजल्ट आने की उम्मीद की जा सकती है। और जो लोग इन सब्जेक्ट्स को फोकस नहीं कर रहे हैं और वो अपने क्वांट और रीजनिंग की परफॉर्मेंस के ऊपर पॉजिटिव रिजल्ट की सोच रहे हैं, हो सकता है दे मे बी सरप्राइज्ड आफ्टर द रिजल्ट। तो इसलिए मेरा बिल्कुल कैंडिड व्यू ये है कि यदि आपकी एसे राइटिंग अच्छी हुई है, प्रेसी राइटिंग अच्छी हुई है, इंग्लिश पेपर अच्छा हुआ है और जनरल अवेयरनेस अच्छा हुआ है, तो आपको इंटरव्यू की भी साथ साथ तैयारी करनी चाहिए। अदरवाइज आपको इमीडिएटली अपना फोकस जो आने वाले 6 एग्जाम्स है उस पर डाल देना चाहिए, क्योंकि बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट आएगा। मैं आपकी जो फीडबैक है उससे समझ गया हूं कि किस डायरेक्शन में आप लोग सोच रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका पास हो जाएगा, तो मैं निराश नहीं करना चाहता। कई लोग अभी भी कॉन्फिडेंट होंगे, नहीं हमारा तो क्लियर हो जाएगा, कोई इसमें हर्ज नहीं है ऐसी भावना रखने में। तो आप क्या करें, आप 10% टाइम सिर्फ ECGC के इंटरव्यू को दीजिए, 90% टाइम आप फ्यूचर एग्जाम्स को दीजिए, और रिजल्ट आने के बाद अपना टाइम बढ़ा लेना। अगर आप पास हो गए तो 100% टाइम ECGC के इंटरव्यू को दे देना, और पास नहीं हुए तो फिर आपको फोकस क्लियर हो ही जाएगा। तो इसलिए इस मेथड को अडॉप्ट कर लीजिए। ये है जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। अब आप में से कई होंगे जो ऑलरेडी क्लर्क हैं, उनको PO एग्ज़ाम पे फोकस जरूर करना चाहिए। और जो लोग ऑलरेडी प्रोबेशनरी ऑफिसर हैं, उनको फ्यूचर ईयर के RBI ग्रेड B एग्ज़ाम पे वो फोकस कर सकते हैं, या डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स पे फोकस कर सकते हैं, JIB CIB पे फोकस कर सकते हैं। रिज़ल्ट बहुत सरप्राइजिंग आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जो मर्जी इसके अंदर लोग कट ऑफ वट ऑफ डिस्कस करते रहे, मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको बता दिया है कि जो लोग सोच रहे हैं हम पास हो जाएंगे, उनको भी सरप्राइजिंग रिज़ल्ट आएगा, और जो लोग सोच रहे हैं हम पास नहीं होंगे, उनको भी सरप्राइजिंग रिजल्ट आएगा। क्योंकि डिसाइडर होगा आपकी एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग स्किल और इंग्लिश पेपर, क्योंकि सारा फोकस इस पेपर में समझ आ गया है कि कम्युनिकेशन है। वो उन कैंडिडेट्स की तलाश कर रहे हैं जिनकी कम्युनिकेशन पे कमांड है, इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड है। ये मेरा इन्फ्रेंस है, मेरे तजुर्बे से मैं बोल रहा हूँ। बाकी जो होगा सबके सामने होगा, मगर अगर आप अपने टाइम को बचा लेते हैं, आने वाले टाइम को उसको अभी यूटिलाइज कर लेते हैं, तो आपको निश्चित तौर से फ़ायदा होगा, निश्चित तौर से फ़ायदा होगा। मैंने जानबूझ के ये वीडियो उस समय नहीं डाला जब लोग सेकंड शिफ्ट के लिए जा रहे थे, उससे पहले नहीं डाला। मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। अब जो उन्होंने तैयारी कर ली है उनको जाने दो। अब क्योंकि ये वीडियो वो या तो वापस आके देख पाएंगे, या आप लोग देख रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी दे दिया, इसलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।